हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका, फोर्थ ईयर स्टूडेंट, एम्स नागपुर। आज हम लेकर आए एक नया इंटरव्यू ख्याति के साथ। वी वेलकम यू ऑल ख्याति। कैसा लग Thank, रहा है आपको एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद? thank you, ma'am, for inviting me and giving me this opportunity. And ma'am, काफी अच्छा लग रहा है that I'm studying in a medical college right now. I mean, it's a dream that's coming true. And very few people actually get to actually live that dream. Very nice. तो आपका नीट में स्कोर कितना रहा था? Ma'am, 570, 570. My rank was 48,521. ओके, सो अभी आप कौन से कॉलेज में हैं? Right now, studying in SCGMC Nanded. Dr. SCGMC Nanded. ओके, ओके। तो ये सब जो नीट का जर्नी आपका कैसे शुरू हुआ, लाइक कहाँ से ये सफर शुरू हुआ और क्या चीज थी जो आपको हमेशा बहुत मोटिवेट करती रही? क्योंकि बीच में ना हम क्या होता है कि बहुत बार ऐसे लगता है अब छोड़ देना चाहिए, पर फिर भी कॉन्स्टेंटली आप अपनी जो सफर है उसको फॉलो करते रहे और फाइनली अपने मुकाम तक पहुंच गए। आप बताइए। My NEET journey actually began when I had just completed my 10th grade boards. I'll be very frank, did not even know that I had to write NEET to get into a medical college until I came in 10th. So before that, I really thought it was just like any other entrance exam for like any college. But I had joined Akash. Like, I joined Akash for coaching. And it was pretty tough, I would say, among all the other people because it's a very competitive nature. Like, preparing for NEET as a competitive exam, everybody's really competitive in that. And it takes, in fact, looking at each other and looking at your classmates is a huge motivation itself. Like, you want to study, you want to crack the exam, and you want to get into a college. Like, most probably like the same college as your friends would like to go to. That was one of the huge motivation. My parents supporting me and my brother supporting me was another motivation. And one of the major thing I feel for like giving you motivation is if you really want something, you work hard for it, no matter what. And I know in between थोड़ा slack off करने लगते हो because it's natural, you're human. But how you overcome that, like how you get like overcome that laziness or that slack of on is what actually makes you more like determined for your exam. So yeah, it's actually how you look at it. You're really serious about it. You do anything to just to write the exam and clear it with like flying colors. हाँ बिल्कुल, लाइक वो ऐसे बोलते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात That मिलाने में लग जाए। exactly like that. लाइक अभी देखो कैसे कि एग्जाम पास में आने वाला है और Hmm. लोगों को ऐसे फिजिक्स में क्या करना चाहिए, बहुत डाउट्स रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो Hmm. में क्या करना चाहिए। तो एकदम इस लास्ट मोमेंट पे आप फिजिक्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? फिजिक्स के लिए अगर मैं सबसे पहले ये रेकमेंड करूँगी कि अगर एक फॉर्मूला नोटबुक बनाइए जिसमें हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट और द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूलाज है उसको सबसे पहले लिखिए। आई एम प्रीटी श्योर इतने एग्जाम्स इतने टेस्ट ये सब भी लिख चुके हो एंड पता भी है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं ईच चैप्टर से। तो उसके पहले फॉर्मूलाज लिख दीजिए। कीप इट इन वन प्लेस सो दैट एवरी डे यू कैन जस्ट लाइक गो थ्रू इट एटलीस्ट इट याद रहेगा because remembering each and every formula is not possible. You need to keep revising it again and again. एक तो पहले formula जो करो and solve as many questions as you can. That's a biggest I think you can do anything. जितने तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स के लिए दैट्स बेटर बिकॉज हर एक क्वेश्चन फिजिक्स का it can come in a very unique way. Like they can twist and turn the question as much as they want, and yet the answer is very simple. Like you just need to apply one or two formulas and you get the answer. तो जितना तुम प्रैक्टिस करते हो वो क्वेश्चन तुम्हें इतना और आइडिया आने लगता है कि हाँ इतना लंबा क्वेश्चन का कोई फायदा ही नहीं है एट द एंड देर आस्किंग फॉर अ वेरी सिंपल थिंग तो प्रैक्टिस एक्चुअली मेक्स इट ना तुम क्वेश्चन सॉल्व करो और एक फॉर्मूला बुक बनाओ सिंपल फॉर्मूला बुक बनाओ के उसको देखोगे दैट विल बी रियली हेल्पफुल दैट्स वन थिंग आई विल ओके। ऐसे लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसा उतना वास्ट तो नहीं है, पर जो चीजें होती हैं उनको याद करना एंड एकदम जब एग्जाम पे वो क्वेश्चन स्ट्राइक करता है तो तुरंत रिकॉल करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो उसको कैसे Hmm. डील करते थे? Inorganic is read it multiple times. That's the only advice I can give. Like you have to keep reading it multiple times. Like look at the trends. Actually, trends is very helpful. If you understand the trends, you can very easily understand inorganic chemistry. Trends is the main thing. Remembering the elements is not. If you understand the trends, you'll understand the question itself because majority of times the questions are not on what is the element rather than asking ki what are the order of this. Like anything like order of electronegativity or like mass or anything in general. So you keep on reading it and revising the trends, that's gonna help you a lot for inorganic. That helped me at least. I had made separate notes for inorganic, which only consisted of the trends. That is very nice. ओके। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या सजेशंस है आपका? Organic is like it's pretty interesting because for me, organic was a little tough. A lot of my friends loved doing organic chemistry, whereas I never understood it in the starting. Basic key to solving organic chemistry is knowing the basic concept, like from your nomenclature, your basic thing, like how the carbon is arranged along with the hydrogen. That key thing is what's going to make your future organic chapters very easy to understand. Starting का समझ होना बाद में आराम से समझना and remember the reactions. Reactions are very important because they make lot of number of catalysts are present. You also realize like make a list of catalysts also and write a list of the names of the reactions. The many catalysts and certain reactions only require those. Right. So you can make another chart. Just make a chart when you make a notebook also. Make on a A4 paper, make a chart, stick it on your wall. Look at it every day. Whenever you're studying or you when you get up before sleeping and it's going to be very easy then organic chem. That's what I did and that's my friends actually suggested me and it helped me quite well. ओके। और लाइक अभी अगर हम बायो का रीसेंट ट्रेंड देखें तो पूरा हमारा एनसीईआरटी बेस्ड जो है प्रोग्राम मतलब चल रहा है, एग्जाम्स क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो अभी एकदम ये लास्ट मंथ में एनसीईआरटी रीड करना चाहिए, मतलब कि जैसे किसी ने एक आध बार एनसीईआरटी रीड कर रखा है, अब वो सोचे कि मैं अभी पूरा एनसीईआरटी रीड कर लूँ, मतलब क्या तरीका होना चाहिए बस लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी के लिए? Last month की strategy में just have a glance over the book. No need like पूरा एक बार word to word मत पढ़ो because it's actually going to eat up a lot of your time because मैं सिर्फ 11th में नहीं 12th का भी bio complete करना है and काफी बड़ा syllabus है bio and bio has the highest weightage also. अगर एक बार पढ़ लिया स्टार्टिंग से एक या दो बार and especially if you've already highlighted the important notes, if you've underlined it, that's really amazing actually because later when you keep on revising it, तुम्हें उतना पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है एंड ऑब्वियसली इतने क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व नहीं करते तुम्हें पता है वो एक ही एरिया से ज्यादा बार आता है एक और बात ही थोड़ा हटके आता है वो टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज diagrams actually like a lot of students after looking at the diagram they generally ignore what's written below it. One of my teachers had actually given me this tip: you do not ignore what's written below the image because उसमें से भी questions आते हैं and believe me it actually comes. वो एक छोटा सा जो तुम्हारे छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं एनसीईआरटी में उसको अगर तुम इग्नोर करते हो ना यू टेंड टू लूज वन और टू क्वेश्चंस के वो पढ़ना जरूरी है एट द एंड इफ यू वांट टू एंड हाईलाइट करके रखो वो एक बार पढ़ लो ना because actually NCERT is not that big. It's as a person who loves reading books, it's very easy. Just they keep on reading it as a novel if you like, and वो याद भी हो जाता है. वो आ जाता है याद. ओके, तो अच्छा है लाइक जो हाइलाइट किया हुआ है उसे रीड करना, पूरा बुक के थ्रू जाना, Hmm. अभी तो इतना टाइम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सही है। और लाइक बोर्ड के साथ अभी तो वैसे बोर्ड एकदम पास में आया और शायद स्टार्ट भी हो Hmm. चुके हैं। तो बोर्ड के साथ नीट का प्रिपरेशन कैसे मैनेज करना होता है? बोर्ड के साथ नीट का प्रिपरेशन कैसे मैनेज करें? Honestly, since your boards are coming closer right now, if it's already started, I think it's a CBSE students it's a huge advantage compared to state board students. Like, I'm a state board student, so I know how it is difficult to manage. But like if you're a CBSE student, right, you're already reading his NCERT for your boards, है ना? तो तुम्हारा उतनी बार रिविजन हो चुका है तुम उतनी बार बुक्स को देख चुके हो है ना
So you did not worry about NEET much because सब कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो। अब तुम्हारे बोर्ड्स आए, तुम बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ते हो, राइट? तो तुम्हारा रिविजन एक्चुअली बहुत अच्छे हो जाता है तुम्हारे बोर्ड्स में। Once you're done with your boards में also you know some certain set of questions are going to come, and you know वो limited questions ही है। And one good thing about boards is even if you write something, you're gonna get marks. It's not going to be like अगर गलत आंसर लिखा बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। They give you some set of marks. Like बच्चे ने कोशिश की है लिखने की। So तुम्हारा एक्चुअली नीट काफी कवर हो जाता है बोर्ड्स के वक्त पे। But for state board students, it's actually a little challenging because स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स की बुक्स अलग होती है, स्टेट बुक्स अलग है एंड एनसीईआरटी बुक्स काफी अलग है, लाइक कंटेंट वाइज आल्सो दे आर डिफरेंट। So that is where state board students should actually like repeatedly read NCERT whenever they have some free time or whenever they're trying to refer books or something. Read NCERT that time. Then at least तुमने एक या दो बार तो अपने कोर्स में पढ़ा होगा एनसीईआरटी अपार्ट फ्रॉम द स्टेट बोर्ड। एंड जब तुम्हारा नीट आएगा, व्हेन यू रीडिंग द चैप्टर अगेन जस्ट फॉर रिविजन, यू विल नॉट बी लाइक कि हाय ये एक और नया टॉपिक कैसे आ रहा है, ये लाइक ये स्किप हो गया था या अभी इतना बड़ा टॉपिक मैं कैसे कवर कर पाऊँ। You will not face that अगर पहले से एनसीईआरटी लाइक स्टार्टिंग से वो हैबिट बना के रखी है फ्रॉम योर 11th एंड टिल योर 12th की एंड तक। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज एक्चुअली योर बाइबल फॉर मी। ओके। सो लाइक अभी कैसे होता है कि एग्जाम पास में है पर बच्चों को लगता है कि उनका शायद बहुत बैकलॉग भी हो रखा है, कुछ बच्चों का हो रखा होता है। तो हम्म उस बैकलॉग को अभी कैसे डील करें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है पर स्टिल कवर तो करना है सिलेबस। ओके, बैकलॉग वेरी नेचुरल टू हैव, वो होता ही है। So one way how I dealt with backlog is पहले like in a place पहले make a list of what all topics are remaining जो तुम्हारे backlog वाले topics है पहले वो लिखो और फिर उन टॉपिक को डिवाइड करो प्रायोरिटीज के लिए कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आएगा, जो थोड़ा मीडियम्स है एंड जो सबसे लेस है। एंड उसमें भी यू रीडिवाइडेड कि कौन सा तुम्हें टॉपिक आता होगा, like, कभी तो सुना होगा क्लास में या कभी एक बार पढ़ा होगा। उसमें भी डिवाइडेड अगेन कि तुम्हें कौन सा बहुत ही अच्छे से आता है, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, जो तुम्हें थोड़ा बहुत आता है। तो फर्स्ट यू डू दो टॉपिक जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, so that at least you're covering up that syllabus एंड तुम उसको वैसे पढ़ो ताकि बाद में तुम्हें वापस रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े, लाइक जस्ट लाइक 1 or 2 days बिफोर द एग्जाम आल्सो ना। वो बैकलॉग को तुम ऐसे ट्रीट करो जैसे कि तुम्हारा एग्जाम पास में है तो उसको एक ही बार कवर कर पाओ। उसको ना जैसे तुम्हें पढ़ना है कि रिविजन के वक्त तुम्हें वापस ना पढ़ना पड़े कि ये स्टार्टिंग मेरा नहीं हुआ था, लेट मी डू इट अगेन नाउ जस्ट लाइक वन डे बिफोर एग्जाम। डोंट डू दैट, इट्स गोना कॉज अ लॉट ऑफ टेंशन। तो पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी है वो भी कवर करने हैं, फिर जो थोड़े मीडियम्स हैं एंड जो सबसे लास्ट में विच यू कैन डू इट लाइक इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, 1 घंटे या 2 घंटे में हो जाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूज ह्यूज चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So do not miss those topics actually because that's going to be a game changer. तुम important topics छोड़ दोगे तुम्हारे काफी marks miss हो जाएंगे just because you never thought कि यार let me cover it up. It's not वैसे ही करना। सो बेसिकली स्मार्ट वर्क करने का भी हमको जरूरत है एक स्मार्ट वर्क लास्ट के। एग्जैक्टली, यार डोंट उतना हार्ड वर्क करने की जरूरत है भी नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो वो ऑटोमेटिकली इट्स गोना बी वेरी फ्रूटफुल, ट्रस्ट मी। वो हो जाएगा, उसको तुम डिवाइड करते जाओ ना, बिकॉज तुम जितनी बार उस सिलेबस को देखोगे कि यार इतना सिलेबस बाकी है, इतना सिलेबस बाकी है, it's just gonna cause more and more stress to you, which is of no help. So divide it, prioritize the topics, and make sure actually backlog के लिए one more thing I was told, do not like waste a lot of time. Like, I won't say waste a lot of time, but try to add in a little extra hours of studies just to cover up the backlog. Like if you have a proper schedule made, like a lot of students make a proper schedule, and you do not want to utilize the schedule का time पे कि यार let me cover my backlog then, तो इसमें तुम्हारा जो आने वाला टॉपिक है वो भी backlog बनने लगेगा, तो eventually तुम्हारे backlog कभी खत्म होगी। तो व्हाट टू डू इज जो तुम्हारा स्केड्यूल है स्टिक टू इट, जो तुमने बना के आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, जो करना है, इतने से इतने टाइम में डू इट।
And free time, like reduce your screen time if you want, reduce your playing time a little. Like just try to reduce something so that you can cover the backlog. So हमारे extra topic भी cover हो जाता है वैसे ही करना लाइक लास्ट के मंथ में हमें पता है मॉक टेस्ट जो है वो बहुत यूज़फुल रहते हैं। तो भी है। कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए, उनको कैसे एनालाइज़ करना चाहिए ताकि वो हमें एग्ज़ाम के टाइम कुछ हेल्प कर सके? Mock tests are very useful. Actually, mock tests is your biggest, actually is your best friend for preparing for your exam. Mock test, अगर तुम एटलीस्ट 2 महीने से पहले शुरू करो लाइक देना लाइक फॉर 2 months regularly you get. And regularly does not mean like each and every single day you do it. Regularly means at a periodic time you do it. Every 2 days or every 3 days you do it. Then that's really helpful. एंड सेकंड इज ये नहीं कि मॉक टेस्ट देने के बाद तुम बस छोड़ जाएगी हाँ एग्जाम दे दिया रिजल्ट देखा जाएगा बिकॉज आई सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दैट एंड आई myself did that initial time. You need to analyze first. Do after you submit your paper, go home like your whatever how you're checking. If you're giving it online, result थोड़ी देर बाद आएगा, immediately नहीं आएगा. Analyze the paper. What all questions you have left first. कि ये मेरे को क्यों नहीं आया एग्जाम के वक्त ये इतना इतना डिफिकल्ट था कि मेरे को एग्जाम के वक्त क्यों नहीं याद आया पहले वो सेकेंड इज वंस योर रिजल्ट कम्स आउट चेक ऑन व्हाट वर क्वेश्चंस यू डिड रॉन्ग बिकॉज जो तुमने अभी गलत किए हैं वही शायद से वही क्वेश्चन तुम्हारे नीट में भी आ सकता है एंड अगर तुम्हें नहीं पता उसका करेक्ट आंसर तो तुम नीट में भी गलत ही दोगे विच यू डोंट वांट तो पहले एक एरर एनालिसिस बुक होगा एवरी टेस्ट यू हैव गिवन फ्रॉम योर part completion like from a part syllabus test your full syllabus test like part syllabus test like कुछ chapters देखे जैसे 3 या 4 chapters देखे each subject से when you give a test ना उसका भी एरर एनालिसिस बनाओ और जब तुमने पूरे 11th एंड 12th का सिलेबस कवर करने के बाद भी जब तुम टेस्ट दे हो उसका भी एरर एनालिसिस एंड वंस यू मेक एरर एनालिसिस go through those topics again. Like just have a glance, like revise it. कि मैं यहाँ पे क्यों गलत की थी? Like did I get confused with something else? Yeah, you assume things, and most like wrong thing to do during exams is assuming. तुम्हें नहीं आता है, do not do it wrong because यहाँ पे तुम्हारी negative marking वो अलग होगा अगर तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो बट अनफॉर्चुनेटली है तो अगर तुमने गलत कर दिया तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे एंड इट्स नॉट जस्ट 1 mark यू लूजिंग यूर एक्चुअली लूजिंग 5 marks क्योंकि तुम्हारे 4 marks तो जा रहे हो क्वेश्चन के प्लस वो एक्स्ट्रा -1 भी आ ही रहा है क्योंकि तुमने गलत आंसर टिक किया तो मेक एन एनालिसिस बुक एरर एनालिसिस बुक एंड उसको रोज पढ़ो कि वो टॉपिक में तुम कहाँ गए थे और उस टॉपिक को भी रिवाइज करो एंड अगर ऐसे ये चीज फिजिक्स में रॉन्ग हुए थे फिजिक्स में देयर मल्टीपल रीजंस एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है या फिर तुमने फॉर्मूला ही गलत डाला या फिर यू डिडंट रीड द क्वेश्चन करेक्टली एंड बायो में एक्चुअली यू डिड नॉट रीड द क्वेश्चन करेक्टली काफी कॉमन है लाइक ऑप्टिकल इल्यूजन होने लगता है लाइक द क्वेश्चन आस्क यू सो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बट यू फॉरगेट टू रीड द वर्ड नॉट तो तुम सारे देखते कि यार सब तो करेक्ट ही है मतलब उसमें से रॉन्ग क्या है देन एट टाइम्स ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें आते भी होंगे लेकिन तुमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं तो तुम आंसर ही नहीं कर पाए करेक्टली तो तुम छोड़ देते हो ऐसे क्वेश्चन या फिर तुम लाइक तुक्का मार के लाइक कि भाई लेट मी डू दिस वन क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा क्या एक नेगेटिव and one negative is going to cost a lot. Rather miss the question if needed rather than putting in wrong answer. So mock tests that were really nice and regularly in the sense try to do it starting when you do like initially like suppose 2 months like I said पहले 2 महीने से start करो. Every 3-4 days you give and then you make a book also like you analyze it. Now as you're nearing towards the exam जैसे एक महीना बचा exam को then you start giving it every 2 days instead of every 3-4 days start giving it every 2 days. Now in the last 2 weeks of your exam that first week write it every single day. तो तब तो तुम्हें पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे लाइक यू कैन ब्लाइंडली आंसर फ्यू क्वेश्चंस आल्सो तुम इतने टेस्ट दे चुके हो वो आ जाता है एंड इन द लास्ट वीक do not write more than 3 mock test exam because you do not want to write like mock test 2 to 3 days just before the exam because of stress or tension students like often गलत करने लगता है आंसर्स पे एंड फिर उसके रिजल्ट देखिए दे लाइक यार एग्जाम के पहले मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं मैं नीट एग्जाम में कैसे लिखूंगी like what am I going to do in the main exam then avoid that stress do not write the exam in the last week तुम्हें पेपर सॉल्व करना है just do it ऐसे do not write it as a test just write it as कि हाँ these are the set of questions I need to solve it देख लो गलत हुआ it's okay see why it went wrong सही हुआ also very nice कि चलो अच्छा
but do not write it as a test. And all these mock tests which you're writing, try to sit in an environment which will make you feel तो तुम नीट के वक्त होते हो। अगर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो वो तुम्हारा एनवायरनमेंट वैसा है, योर फ्रेंड्स आर देयर, अदर क्लासमेट्स आर देयर, बैठे ही हो एक साथ बैठे। बट इफ यू डू ऑनलाइन, ऑनलाइन भी करता है, तो ऑनलाइन के वक्त मेक श्योर कि तुम एक अच्छे से डेस्क के बेंच पे बैठो, देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग। एंड one thing is like because अभी most of the time ये exams गर्मियों में होती हैं and a lot of students are preparing online, they prefer being in AC as well, right? Now avoid sitting in AC. तो लास्ट के 2 हफ्तों में ना AC ऑन मत ही करो पढ़ते वक्त या फिर एग्जाम लिखो, बिकॉज जब तुम्हारा फाइनल डे का एग्जाम है you don't know what kind of school you will get, and most of the time स्कूल में फैंस भी नहीं होते। अब अगर तुम्हें एसी में लिखने की आदत है, सडनली तुम गर्मी में लिख रहे हो, इट्स तुम्हारा माइंड काफी शिफ्ट हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म गुड। So try to make your mock tests as realistic as you can. Actually, that's one. Good. सो बेसिकली लाइक हमें वहां जैसे माहौल मिलने वाला है तो अभी से उसकी Wrestling. तैयारी करो ताकि वहां एडजस्ट कर पाए। Prepare for Yeah, prepare for the worst environment you're gonna get. You're not gonna get a very quiet environment also. You find your invigilators talking or something or the other. Some other distraction is going to be there. And you need to make your mind so strong that कुछ भी हो रहा होगा तुम्हारा पेपर तुम्हारा फोकस सिर्फ पेपर पर ही है और कहीं पर भी नहीं। तो लाइक मॉक टेस्ट का तो हो गया कि देना ज़रूरी है और देना चाहिए। अभी लाइक एंड में हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए कि हम बैकलॉग भी अगर कुछ थोड़ा रहा तो वो भी कवर कर लें, और जो टॉपिक वाइज़ लाइक क्या डिवीज़न, कितना टाइम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना चाहिए सो दैट कि एक अच्छा स्कोर ला सकें? Uh, if it comes to like allotting time for subjects, obviously तुम सबसे ज्यादा टाइम बायो को देते हो, तो सबसे ज्यादा वेटेज भी उसका ही है, वेरी नेचुरल। एंड बट अ लॉट ऑफ टाइम काफी स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा टाइम अपना फिजिक्स में चला जाता है उनका, कि यार सॉल्व उतने क्वेश्चंस करने हैं, उतना टाइम लगता है। डू नॉट स्पेंड मोर देन 1.5 hours for physics per day, trust me। क्योंकि तुम जितना ज्यादा फिजिक्स में काम करोगे, द पेपर वेटेज इज स्टिल लेस ओनली कंपेयर टू बायो। तुम जितना डबल बायो का कर सकते हो उतना बेहतर है। सपोज just do 1.5 hours of physics and try to do the same thing but 2 to 2.5 hours for bio then, तो तुम्हारा बायो उतनी देर में बहुत कवर अप हो जाता है। एंड फिजिक्स में भी do not continuously solve questions for like 1.5 hours, try to divide that also in time, कि पहले 45 minutes just read those chapters जिनके ज़्यादा थ्योरी बेस्ड आते हैं, बिकॉज काफ़ी चैप्टर्स फिजिक्स के मोर देन न्यूमेरिकल थ्योरी theoretical होता है, like read it एक बार, read through your notes, and the rest 45 minutes solve 45 to 50 questions, so you can divide your time like that. And as for chemistry, spend more time I'll say for like physical chemistry is again like a solving होती है, तो तुम्हें उतना ज़्यादा टाइम उसमें बिताने की ज़रूरत नहीं, because it's again formula based and formulas are very easy in chemistry compared to physics के formulas. They're not very confusing. So if you spend just like half an hour also on just physical chemistry, that's very good. वो हो जाता है, cover up हो भी जाता है। Comes to inorganic and organic actually. Inorganic में तुम्हें थोड़ा ज़्यादा spend करना पड़ेगा। Like I said, वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। You have to understand the trends. तुम उसको रट नहीं सकते। ये तुम जितना रटने की कोशिश करोगे उतना तुम्हें एंड में और याद नहीं आता। Better you understand the topic, and same thing for organic also. Understand the reaction. Why is this thing getting reduced or oxidized in whatever it is? You need to understand the topic. क्योंकि तुम जितना रटोगे actually that's a very bad thing a lot of students, especially few topics in bio also, कि like मेरे को ये topic पसंद नहीं है यार लेकिन important exam के लिए मैं इसको रट ही लेती हूँ ना। रटना is not the solution, because examiner is also very smart on such things कि जो तुम वो टॉपिक को ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करेगा थिंकिंग कि भाई तुम्हें कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन, एंड अगर तुमने रटा यू डू नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आल्सो, लाइक भाई क्या ही पूछ रहा है एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चंस वोंट कम इन एग्जाम, दिस देन व्हाट्स द फन इन इट, लाइक इट डजंट साउंड फन बट इट्स लाइक भाई मजा थोड़ी ना आएगा पेपर में अगर तुम्हें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डजंट लुक्स नाइस। So
एंड में एक तो वही करना रिवाइज केमिस्ट्री एंड बायो आल्सो नोट्स कीप गोइंग थ्रू योर नोट्स लाइक मेकिंग नोट्स इज वेरी एसेंशियल लाइक काफी लोगों को मैंने भी देखा है लाइक अपने क्लास में वो लोग नोट्स नहीं बनाते एंड दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग क्योंकि तुम एंड में तुम कितना फ्लिप कर सकते हो टेक्स्ट बुक के बीच में यू नो कौन से पेज पे क्या था मेक नोट्स हाईलाइट दोस दैट इज बेटर एंड schedule wise like I know you must have made a very intense schedule for your need कि यार इतने इतने घंटे पढ़ना है आज और इतना पढ़ना भी होगा तो थोड़ा और एक्स्ट्रा कवर अप भी करेगा try to cover your backlog first that's very important avoid having backlog second is as you come near to the exam try to make your schedule less and less intense like अगर तुम suppose 8 घंटे पढ़ते थे दिन में उसको और कम करने की कोशिश करो for exam try to make it just 7 or just 6 hours on the last 2 weeks of your trip I'm not talking about good 2 months back. क्योंकि तुम उतना ज़्यादा पढ़ोगे एक्चुअली स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फैक्टर क्योंकि तुम उतना स्ट्रेस से नहीं रहते हो कि यार इतना हमको पढ़ना है and since you're studying for so many hours and you have to give an exam also on top of it writing an exam is mentally exhausting अगर तुम एग्जाम भी दे रहे हो फिर इतना पढ़ भी रहे हो तो your brain is going to get saturated and you won't understand anything you're just blankly flipping through the pages of the book give yourself enough rest. And 1 or 2 days before your exams, my teacher also told me this: do not study. अगर तुम्हारा बैकलॉग है भी, do not study that topic. छोड़ दो. It's gonna cause unnecessary stress. जो तुमने नोट्स बनाया, जितना भी तुमने पढ़ा, बस उसको रिवाइज कर देना. That is not. लाइक लास्ट में अभी ऐसे एकदम अभी जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा हम प्रेशराइज़ हो जाते हैं Hmm. और हो सकता है कभी-कभी एकदम एंड पे आके भी ऐसे लगने लगता है कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ देना चाहिए या फिर बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। तो एकदम मेंटली ना हम पूरा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कभी-कभी। तो उस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करें अगर हो रहा है तो फिर हम कैसे डील कर सकते हैं? वो थॉट्स आते हैं. When you prepare for competitive exams, ऐसे थॉट्स आते हैं एक्चुअली कि यार नहीं हो रहा मेरे से लेट्स गिव अप राइट नाउ. वो आते हैं. It's very natural. How you cope up with it is very it's a huge thing. Now one way to cope up with is talk to people. And if you're staying like if you're preparing from your own house, talk to your parents about it, talk to your siblings about it. यार ऐसा स्ट्रेस हो रहा है मुझे कि अगर ये हुआ मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको छोड़ ही देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेरी तो रॉन्ग फील्ड आई चूज करके टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट इट बिकॉज दे आर योर बिगेस्ट सपोर्टर they're gonna find a way to talk you into it कि नहीं यार तू छोड़ नहीं सकता this is your dream you need to do it right I know it's stressful but वो तुम्हें काफी सपोर्ट करेंगे talk to them talk to your teachers also about it because my teachers को भी इतना experience है and हर साल ऐसे सेट ऑफ बच्चे आते हैं और obviously everybody सबको स्ट्रेस आता है कि यार नहीं हुआ एग्जाम पास में आ रहा है व्हाट इफ कुछ एग्जाम में हो गया मुझे लाइक आते भी सारे आंसर लेकिन गलत कर दिया मैंने कुछ लाइक उस गलत बबलिंग ही कर दी गलत सेट पेपर लिख दिया वेरी कॉमन मतलब यू हैव सच थॉट्स तुम्हें बस बात करनी बिकॉज यू नीड टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ एंड बेस्ट वे टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ इज टॉक टू पीपल और just go out for a walk like where you study go out of that environment अगर तुम रूम में पढ़ते हो ना रूम के बाहर निकलो go out for a walk just go out for a half an hour walk if not much change your environment because when you change your environment your mindset also changes try to keep studying in different environments also because when you study in that one place now your it becomes boring try to make your studies ऐसे interesting कि तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में तुम समझ भी रहे हो तुम्हें मजा भी आ रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है rather than कि यार इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा रटना पड़ेगा लिखना पड़ेगा just for the exam जितना you can make your mind more diverse towards other things उतना it's better talking or exercising in general because in such like when you prepare for your competitive exams because तुम्हारा schedule इतना tight है सिर्फ पढ़ने के लिए काफी like लोग exercise नहीं कर पाते like they forget that there's something known as exercise also now that's very wrong because it actually affects your health also quite a bit mental health mostly and exercising is the best way to clear up your mind also that like, if having a mind block also like एक भी question solve नहीं हो पा रहा
because your actual brain is saturated. Change your mind. Go for an exercise. Go for a walk. Talk to someone. Talk to your friends. Avoid scrolling through social media. काफी लोग करते हैं कि यार बात क्यों करनी है, मैं थोड़ा स्क्रॉल ही कर यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू. It's an addiction. Once you start scrolling, you continuously scroll, and that's going to eat up a lot of your time. And you won't actually, and after you like social media, actually there's a lot of guilt you feel when you waste your time thinking, yeah, we're not wasting our time. Actually, it's a huge way to de-stress yourself. But when you scroll through social media, you realize तुम्हारा stress भी कम नहीं हुआ है and you wasted that time, which actually happens. But अगर तुम किसी से बात कर रहे हो and you realize कि हाँ ये actually helpful भी, let me just take a break. So that way you're utilizing your time. Maybe not for studies, but for something that's much better and important. या दैट्स लाइक वही है कि सोशल मीडिया पे एक बार जाते हैं तो फिर पूरा घूम ही Exactly. जाते हैं, फिर कुछ समझ नहीं आता. Exactly. सो लाइक क्या आप एकदम क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी नीट एस्पिरेंट के लिए कि वो एकदम चार्ज अप रहे और अपना गोल जो है वो अचीव कर लें? I'll just give one message and we don't give up and do not lose hope. You've come so far preparing and end में I know काफी exhausting भी होने लगता है, but just give yourself a little more push, like a little push. Write the exam and it's absolutely going to be fine. What your result is going to be later, don't think about it. When you're writing the exam, don't think about कि मेरा result ऐसे ही आना चाहिए. Write your main exam also how you wrote your mock test कि यार देखा जाएगा जैसा भी रिजल्ट हो. Don't overthink about it. जब होगा सो होगा. That's it. ओके, थैंक यू सो मच ख्याति फॉर टाइम. ओके, थैंक यू गाइस.